Vikram from Dharavi. I'm sorry we're a little delayed. There is a technical problem. I've got fantastic broadband network here, but obviously back in Dharavi, the network connectivity is compromised. And I don't know whether you're able to hear me. I hope you're able to hear me. Vikram, welcome. हाँ मैम। आप सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बस मेरे को आपकी आवाज आ रही है, आप मुझे दिख नहीं रहे हो। So we're facing technical difficulties, friends. I have Vikram who is in Dharavi right now, and you would have heard my 27th March talk with Vikram and with others from Dharavi and with Dolly Rateshwar, who runs the Dharavi Dream Project with these boys. Now, Dharavi has had the first death from coronavirus, which was announced this morning. Dharavi also has had a first confirmed case, or maybe a second confirmed case of coronavirus. And I have Vikram there who is in the middle of all that. And I thought I will get Vikram here to talk to us about what is the impact, what's happening there, how is he feeling personally, how is his family dealing with it, what is the situation there. And let me talk to Vikram. Vikram, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। घर पे भी सब अच्छे हैं। यहाँ ठीक पे है। काफी हंगामा मच गया है कल शाम से। तो यहाँ पे पुलिस लोग ज्यादा ज्यादा हो गई है, पुलिस और डॉक्टर्स आ गया बहुत ज्यादा। तो मेरे एरिया में ही हुआ, मेरे एरिया में 2 मिनट 3 मिनट का वॉक है, तो वो पूरा एरिया पूरा सील कर दिया है अभी। okay, this incident that has taken place is 2 or 3 minutes away from where Vikram lives. He's saying that he's well, his family is well, but there seems to be an increase of cops around, and there seems to be an increase of doctors around, and the situation seems to be very tense. तो मुझे बताओ कि अभी क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप पुलिस की बात कर रहे हो, तो पुलिस ज्यादा क्या कर रही है? ज्यादा पुलिस होने से वहां पे क्या हो रहा है? अभी वो बता रहे कि अभी आपको कोई काम भी हो ना, अर्जेंट खाना पीना लेना हो ना, तो वो भी आप एक दिन में ही 15-20 दिन का ले लो। अभी कोई नीचे ही मत आओ, घर से बाहर ही मत निकलो। अभी सिचुएशन बहुत टाइट हो गया है, तो जो प्यार से भी समझा रहे, जो प्यार से नहीं समझ रहे, उनको चिल्ला के मार के भी समझा रहे, और वो लोग काफी हेल्प कर रहे हैं सबको। नहीं, तो आप कह रहे हो कि पुलिस ये कह रही है कि अगर आपको खाना चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप 10-15 मिनट में कर लो उसको, या नीचे हाँ, ही मत आओ। और ले लो, 10-15 दिन के लिए ले लो, पंद्रह अच्छा, तारीख तक का पूरा ले लो। फिर ओके। दुकान भी नहीं ओपन करेगी वो, ऐसा तो वो बोला। अलाउ कर रहे हैं, वो अलाउ कर रहे हैं आपको जाने को, वो आपको दे रहे हैं जाने, खाना वाना लेकर आने। 1 घंटे सुबह देते हैं, 1 घंटे के लिए। Okay. So what Vikram is saying, I asked him why is there an increase of cops there in the vicinity? And Vikram says that they are allowing them to go once in the morning for an hour and fill up their groceries. They're recommending and advising them to fill up their groceries for 10-15 days at a time and to have as less as possible visibility outside. Now, Vikram, आप हाँ लोगों मैम। के पास ये डेली वहां पे काफी लोग हैं जो डेली ब्रेड अर्नर्स है, राइट? डेली वेज अर्नर्स है जो हाँ दिन में कमाते हैं, फिर जो शाम को मिलता है उसमें खाना पकाते हैं। तो अगर आप लोगों को कहते हैं कि 10-15 दिन का खाना एक साथ लाकर रखें 13 लोगों के लिए, तो ये कैसे मैनेज होगा? नहीं मैनेज होता ये तो। आज डॉली मैम ने थोड़ा हेल्प किया हमें। उन्होंने उनके फ्रेंड से कांटेक्ट करवा के आज हम लोग को थोड़ा राशन दिलाया, तो हमें थोड़ा मिल गया राशन 4-5 दिन के लिए। अच्छा। तो अब इससे थोड़ा मैनेज हो जाएगा हम लोग के घर का। So you know अपने the स्कूल reality, के। the reality of the situation is the cops are advising people like Vikram, people who live in the slums there and in communal chawls, asking them to fill up their groceries for 10-15 days at a time. My question to him was that most of these people are daily wage earners. Now they will have income only for the day. If they expected to feed them their families of 10, 13, 15, 18, 20 at a time and get rations for 15 days at a time, how will they cope? And he said they don't have a way of coping because they don't have the money. In his case, Dolly Rateshwar, who is looking after them, but let's find out what about others. तो आपके जो दोस्त है विक्रम, जिनकी सिचुएशन बुरी है, जिनके पास डॉली नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो लोग को भी थोड़ा बहुत राशन दे रहे हैं, कल मैंने सुना। घर पर जाके एक एक दिन का नाम लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, तो वो लोग को कॉल करके दे के ऐसा बोल रहे थे। तो ऐसा कुछ आया नहीं है, बट दे के ऐसा कुछ बोल तो रहे वो।
कौन कौन बोल रहा है ये, कौन दे रहा है? हाँ, यहाँ पे एक दो लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, अच्छा, कार्यकर्ता होते हैं जो, वो लोग। अच्छा. So Vikram is saying that they have been the people who don't have a dolly in their life, right? He's been held by dolly, his family's been held by dolly, but people who don't have a dolly in their life, they are being given rations on regular basis. It hasn't happened yet, but these people are very hopeful that that will happen soon. तो विक्रम, ये जो आप बोल रहे हो, पुलिस पुलिस हेल्प कर रही है बहुत, राइट, वहां पे? हाँ। तो किस तरह से अभी खाना, जैसे अगर किसी के पास खाना नहीं है घर पर, तो वो लाकर दे रहे हैं? अ, अभी तो इतने लोग को मेरे को इतना पता नहीं क्योंकि हम लोग घर के बाहर से निकल नहीं रहे हैं, बट जो हम लोग के पहले जो रास्ते पे पड़ते हैं घर, वो लोग को दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं घर घर जाके। It's amazing the cops have been providing food for a lot of people there, and they're helping out in the best way possible. There are times, obviously, when they have to use the stick because people don't really understand. But overall, they've been very helpful. Vikram, ये जो आपके 2-3 मिनट बाद का सामने केस हुआ है, जो आज एक डेथ हुई है और एक कंफर्म केस है, वो कहाँ क्या हो रहा है वहां पे? पुलिस वहां पे है वहाँ क्या? पे वहाँ पे पूरा सील कर दिया है एरिया, और वहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स है, जितने भी लोग हैं ना आजू बाजू, उनको इधर आना जाना बंद कर दिया है। मतलब जो वहाँ पे है ना, वहाँ पे से उन लोग को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, और डॉक्टर्स आए हैं चेकअप के लिए उनकी, ताकि अगर वो वहाँ पे हो तो वहाँ से दूसरी जगह पे फैले ना, और दूसरी जगह उन लोग जाए ना, इसके लिए। Okay. So I asked Vikram about what's happening in that area, which is about 2 minutes away from where he lives, where there are buildings, and that area they found a confirmed case, as you know, and another one tested positive. There's no history of travel with that particular person who passed away. And my question to him was, what are they doing and what's happening there? So Vikram confirms that that area is sealed. There's more doctors there. They're taking people away for testing, and that's complete lockdown there. But none of us know what's really happening other than just the media reports. तो विक्रम, वहां पे हाँ। डॉक्टर, आपके आपके हिसाब से क्या है कि अगर कुछ हो जाता है वहां पे, तो अपनी फैसिलिटीज है वहां पे धारावी में रखी हुई, फैसिलिटीज बना रहे हैं फैसिलिटीज? हाँ, कल रात से बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। कल रात से एम्बुलेंस आ गई है, बहुत सारी पुलिस आ गई है। थोड़े बहुत लोग को भी एक जगह पे खड़े रहने नहीं देते हैं। अगर दुकान में भी है तो वन बाय वन ही आने देते हैं, ऐसा लाइन नहीं लगाने देते। फिर बॉक्सेस बनाया है 2-2 मीटर के बाहर, तो बॉक्स के अंदर ही रुकेंगे 2-2 मीटर दूर-दूर सब लोग। काफ़ी टाइट है, और एक-एक बिल्डिंग को ही उतरने दे रहे नीचे, मतलब एक बिल्डिंग से फटाफट दे रहे, फिर वो बिल्डिंग वाले ऊपर, फिर दूसरे, ऐसे चॉल में भी ऐसा ही सेम सिस्टम। Acha. So what Vikram is saying, that there's a lot of precautions that have been put in place, a lot of measures that have been put in place to manage the spread of the coronavirus. So I asked him that is there facilities there, just in case God forbid something happens. And he said that the doctors there are doing the rounds. There are lots of ambulances that they are hearing constantly, and that even things like going down away from your house or away from the building is being managed really tightly. तो विक्रम, वहां पे लगता है आपको कि मेडिकल फैसिलिटीज होंगी? जैसे अगर कुछ हो जाता है आपकी तरफ, बिल्डिंग में तो हो गया, वहां तरफ हो गया, तो अगर कुछ हो जाता है तो लगता है कि आप लोगों को इसकी फैसिलिटीज मिलेगी, आप लोगों को देखेंगे डॉक्टर्स? ये चीज़ तो हमें नहीं पता, बट काफ़ी डर लगता है कि ऐसा कुछ हो ना, कि अगर हो गया तो सब लोग बोलते हैं कि फैमिलीज़ को भी नहीं मिलने देंगे, इसको भी नहीं मिलने देंगे। क्या होगा, क्या कुछ पता नहीं होगा, तो इतना हमें आइडिया नहीं है, बट ऐसा हो ही ना तो सब लोग होपफुल है। और यहाँ पे तो सुबह बहुत सारे लोग आए थे ऐसे ही दवाई कुछ डालने के लिए, स्प्रे मार रहे थे कुछ पूरे बिल्डिंग में, एरिया में। तो ये लोग काफ़ी प्रिपेयर है कि किसको ना हो। और So I asked Vikram, does he feel confident of the medical facilities available for people from his area? And he says he's not sure, but they are hoping that it doesn't reach a point where, he's afraid of it, that it doesn't reach a point where he's in isolation or his family is put in isolation because he doesn't know what is happening. He did mention something that they have come and put dawai, put medicines around. So I just want to ask him about that. Vikram, ये जो बोल रहे हो आप हाँ, दवाई डाली हुई है, मतलब वो क्या दवाई बोल रहे हो आप? कुछ स्प्रे से वो लोग कर रहे थे, सब लोग बोल रहे हैं कि सैनिटाइज़र कर रहे हैं, बट कोई-कोई बोल रहे हैं कि वो कोरोना वायरस किसको ज़्यादा ना हो, उसके लिए कुछ उठा रहे हैं वो। So स्प्रे ही apparently, है।
हाँ, कौन कौन कर रहा है ये स्प्रे? म्युनिसिपल? पुलिस साथ में है, बट उन लोग ने कुछ पूरा कवर करके बॉडी और स्प्रे कर रहे हैं। पता नहीं पुलिस है या डॉक्टर, बट हेल्प कर रहे हैं लोग सब जगह से। So Vikram is saying that he has been observing that there have been people fully covered coming and spraying the colonies, the areas with chemicals. So we are. This is to obviously manage the coronavirus influx. So we're not sure what that is, and I'm sure at some point we will find out what those chemicals are and what are they spraying people with. So विक्रम, आपको कैसे फील हो रहा है इस वातावरण में? कैसे फील हो रहा है? अंदर से बताओ, अंदर से, फैमिली की तरफ से अंदर कैसे आप लोगों को मैनेज कर रहे हो? फैमिली वाले लोग काफ़ी डर गए हैं। वो लोग एक दूसरे को होप दे रहे हैं कि तुम लोग मत जाओ, मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं कि तुम लोग बाहर भी मत जाओ, घर पे रहो जितना हो सके उतना। हमारे पास क्या कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम पैसे वाले नहीं है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और कुछ ट्रेन चालू नहीं है, वरना हम लोग गाँव चले जाते हैं। यहाँ पे अभी आ गया ऐसा, हम लोग काफ़ी डर गए सब चीज़ों को लेकर। So I asked Vikram how is he feeling inside him and how is his family coping. And Vikram says, as positive as this young man is, he says that yes, we are very scared. The family is very scared, as they would be. But they are keeping each other very positive, keeping each other motivated. They don't have an option. They can't just get into a train or a bus and go back to their village because there's nothing available. You can't travel right now. So within what they have, they are managing to hold each other. And to me, that is the story of Dharavi. That is the story of communal living. That is where the community that brings together, comes together, gives each other hope, and it gives each other so much of love. Vikram, one last question to you. ये जो हो रहा है धारावी में, ये जो 2 केसेस हुए हैं आपके आसपास, आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से क्या लगता है? ये खत्म हो जाएगा वहां पे, या क्या लगता है? अभी जैसे सब जगह पे न्यूज़ देख तो रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग सब लोग मिलके इस चीज़ को चले गए, जो रूल्स बनाया है घर के बाहर ना आओ, घूमो ना, तो इस चीज़ को हम लोग हरा सकते हैं। और एक केस फिर 2 के बाद ऊपर नहीं होगा, बट ये सबको करना पड़ेगा, ये एक से नहीं होगा, हम सबको ये सब चीज़ करना पड़ेगा। तो होप करते हैं कि सब लोग करें और ये चीज़ ये 2 के ऊपर कभी ना हो, बस यही होप कर रहे हैं सब लोग। I asked Vikram, what does he think after the 2 cases? Does he feel panicked, fearful? What does he think? Will it spread or will it just remain here? And Vikram very positively says that we all have to manage this together so that it doesn't spread. He hopes that it gets contained at 2 and that this is the end of it. And but for that to happen, he believes that all of us have to follow what the government is saying, social distancing, and making sure that we stay at home and we look after each other. In being responsible, we're going to be looking after each other. The way we do this is we're making sure that we follow the orders, right, Vikram? राइट। You take care, Vikram. Lots of love from all of us. Let us know if there's anything we can do. Feel free to interact, talk to us anytime. Huh? Lots of love. Thank you for your time, Vikram. थैंक Take यू। care. Be safe. Really good.